Good evening, good evening, good evening. Welcome back to another session of NSEJS Sprint Batch, जिसमें बेटा आज हम लेने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी का एक वीक क्विज. ओके, आई होप आप सबकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी से चल रही हैं. एंड एक क्विक रिवीजन के लिए, आप लोग के कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए, आई हैव ब्रॉट अप वेरी नाइस वीक क्विज फॉर ऑल ऑफ यू. सो प्लीज लेट मी नो इन द comment box, in chat box, am I clearly audible and visible to all of you? Is it fine with my audio and my video, guys? Is it fine with my audio and my video? Please write yes in the chat box if it is fine. Okay, so what you have to do, you have to visit to this website www.vquiz.in and आपको वहाँ पे कोड mention करना है 228978. You can also find the link in the description of the video. So do it quickly, please do it quickly. And आप जल्दी से बेटा इसको सही आप सारे बच्चे ज्वाइन कर लो वीक्विज को, ठीक है. So what you have to do, you have to go to this website www.vquiz.in and use the code, enter the code 228978 and you can join this window. So please be quick and बेटा जल्दी से सारे बच्चे आके ज्वाइन कर लो, लॉग इन करो फटाफट, फिर शुरू करते हैं. सो यू गाइज हैव 5 minutes. जल्दी से सारे के सारे बच्चे ज्वाइन कर लो. वेरी गुड. ओके, सो धीरे धीरे करके बच्चे ऐड कर हो रहे हैं. बी क्विक गाइस, बी क्विक. उसके बाद बी क्विक स्टार्ट करेंगे. ओके, सो जल्दी से ज्वाइन कर लो. बी वेरी फास्ट. What you have to do, you have to go to this website www.vquiz.in and then you have to enter this code 228978. Correct? Chalo, very good beta. I think it's the time to start the quiz. Okay, so here is the first question. And you have to answer faster to get more points. So the first stable product of Kelvin cycle is, first stable product of Kelvin cycle क्या है? Is it 3-phosphoglyceraldehyde, ribulose 3,5 biphosphate, phosphoglyceric acid या glucose? Just recall करो Kelvin cycle. पहला क्या होता है? First stable product. Yeah, so the answer to this question should be option A, that is 3-phosphoglyceraldehyde, 3-PGA. 3-PGA बेटा केल्विन साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है 3-PGA. ओके, सो आपको थोड़ा सा दिमाग में याद रखना है. यहां से क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C4 साइकिल. सो प्लीज रिमेंबर, इन केस ऑफ C4 cycle, PEP, phosphoenol pyruvate, that is the first stable product formed. Okay, so no, I'm sorry, PEP is the it is a substance, it is basically the accepting molecule. पहला stable product बेटा malic acid, I'm sorry, ठीक है, malic acid. Okay, so let's move on to the next question. I'm sorry, malic acid C4 cycle में. Next, so we have Abhinshu on top. Next question. Great. Cran's anatomy is found in, Cran's anatomy किसमें होती है बेटा? So very easy, C3, C4, cam plants, or all of the above. Out of these 4 options, which one is the right one? Or out of these 3, C3, C4 and cam plants, which one have the Cran's anatomy? So guys, the answer is C4 plants. C4 plants, sugarcane, sorghum, etc, etc. These plants have the Cran's anatomy. Cran's anatomy वाले plants ही बेटा, इन्हीं को हम C4 plants कहते हैं. यही है जो आपका बेटा C4 pathway show कर सकते हैं. Okay, next question. So Abhinshu and Rikshita, these are the students on the leaderboard. Here we are for the very next question. Yeah, the light dependent reaction of photosynthesis take place in the light dependent reaction photosynthesis का कहाँ होता है? Stroma, granum, cytoplasm या फिर nucleus. Light dependent reaction बेटा PS1, PS2, cyclic photophosphorylation या non cyclic photophosphorylation. So guys, the answer should be granum. Okay, so आपका जो PS1 है, PS2 है, वो आपका thylakoid membrane के साथ associated होता है. So that's why the answer should be B, granum. Okay, great. Now Avisha and Rikshita, these are the students on the top. Next question. Which of the following is not a product of the Kelvin cycle? Not a product of the Kelvin cycle. Glucose, ribulose 1,3 biphosphate, glyceraldehyde 3-phosphate, phosphoenol pyruvate. Out of these 4, which is not a product formed during the Kelvin cycle? Very easy, I think. Yeah, very good. So the answer is PEP, phosphoenol pyruvate. The answer is D.
Okay, so here comes the leaderboard, Abhishu and Rikshita. Next, here we are. The breakdown of glucose to pyruvate is known as, glucose से pyruvate बनना, glycolysis, Krebs cycle, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या ऑल ऑफ द अबव. सो आपका ग्लूकोज बन रहा है फ्रॉम द पाइरूरेट. दिस ब्रेकडाउन विल बी नोन एज, वेरी गुड. सो द आंसर इज ए, ग्लाइकोलिसिस. करेक्ट. ओके, ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है बेटा? साइटोप्लाज्म में होता है. And it is the common pathway between aerobic and anaerobic respiration. So both the students got it right. Great job. Okay, next question. The final electron acceptor in the ETC is, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फाइनल एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन्स का कौन है? NAD+, FAD, O2 या वाटर? सो द फाइनल एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन है? द फाइनल एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इज ऑक्सीजन. वेरी गुड. ऑक्सीजन है बेटा. ऑक्सीजन है जिससे आपका फाइनली आफ्टर गेटिंग रिड्यूस वाटर बनता है. एंड वाटर जो हमारा बन रहा है इसीलिए बिकॉज इट इज गेटिंग फॉर्म ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक पाथवे, इसे हम एनाबॉलिक वाटर कहते हैं. Okay, so oxygen is the final acceptor molecule. Next question. Here is the leaderboard. You guys can check. And here comes the next question. So we are okay. So the Krebs cycle takes place in the, Krebs cycle कहाँ होती है बेटा? सेल के अंदर Krebs cycle कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में या गोल्गी एपरेटस में? Where the Krebs cycle will happen? So the answer should be माइटोकॉन्ड्रिया. वेरी गुड. माइटोकॉन्ड्रिया में बेटा Krebs साइकिल होती है. ये तो बच्चा बच्चा जानता है, राइट? ये 10th क्लास में भी है बेटा, 11th क्लास में भी है. सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द पाथवेज. करेक्ट. हियर इज द लीडर बोर्ड. नाउ टाइम फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. Here we are. The net ATP yield from the complete breakdown of one molecule of glucose is, हमने ग्लूकोज के वन मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया है. हाउ मेनी एटीपी आर वी गोइंग टू गेट? 2, 36, 38 और 40. व्हाट इज द नेट यील्ड ऑफ एटीपी ड्यूरिंग द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज? वेरी गुड. सो द आंसर इज सी, 38 एटीपीज. बेटा 38 एटीपीज आते हैं, ठीक है? 38 एटीपीज आर फॉर्म्ड, नॉट 36. 38 एटीपीज आर फॉर्म्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Abhishu and Rikshita. Now here comes the next question. The process by which water moves through the plant from roots to the leaves is known as. किस process के through बेटा water move करता है through the plant from roots to the leaves? Transpiration, diffusion, osmosis या फिर active transport? The answer is very easy. That is transpiration. Transpiration के through बेटा जो आपका transpirational pull is a force that is actually responsible for pulling the water upwards through the plant, throughout the plant body. Okay, so the answer should be transpiration. Here is the leaderboard. We have Abhishu and Rikshita. Next question. Here we are. The role of nitrogen in plants is to, what is the role of nitrogen in plants? Synthesize proteins and nucleic acids, activate the enzymes, increase water retention या all of the above? नाइट्रोजन का क्या रोल है इन प्लांट्स? सो द आंसर शुड बी ए. जस्ट टेल मी हाउ नाइट्रोजन इज गोइंग टू हेल्प इन वाटर रिटेंशन. वाटर रिटेंशन के लिए तो बेटा यू रिक्वायर सॉल्ट. एंड इन केस जैसे फॉर एग्जांपल हम इंस्ट्रूमेंटा की बात करें, सो उसमें वाटर को रिटेन करने के लिए क्या करते हैं? वी यूज पोटेशियम क्लोराइड, राइट? पोटेशियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस आर इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनिंग द टर्जिडिटी इन द स्टोमाटल सेल्स. स्टोमाटा. ओके, सो activating the enzymes is a function of the like the, I should say, the coenzymes or the prosthetic group, that is the minerals and the vitamins. So nitrogen is a component of the amino acid. It is a component of the nucleotide. So that's why nitrogen is going to help in the synthesis of proteins and nucleic acid. When I say nucleic acid, I mean both DNA and RNA. Correct? Very easy. Next question. So here is the leaderboard. आगे चलता है. The micronutrient that is essential for enzyme activation is, तो आपके एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए? कॉपर, मैंगनीज, जिंक या ऑल ऑफ द अबव? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? नाउ दिस इज अगेन अ ट्रिकी क्वेश्चन. बेटा हमें एंजाइम का नाम मेंशन नहीं किया गया है. सो द आंसर शुड बी एक्चुअली डी, ऑल ऑफ द अबव.
बिकॉज बेटा कॉपर भी किसी तरीके की इंजाइम के एक्टिवेशन में हेल्प करेगा, मैंगनीज भी करेगा, जिंक भी करेगा, बट दे हैवंट स्पेसिफाइड, सो वी आर गोइंग टू कंसीडर all of them. Basically all of the metals mentioned below, they all are the micronutrients and they are going to help in activation of any of the enzymes that are there in the plant system. Okay, so D is the right answer. Next question, and this is the last question for today's class. Very good, here we are, and just tell me, the movement of water across a semi-permeable membrane from a region of high water concentration to a region of low water concentration is known as, so movement of water through a semi-permeable membrane, high water concentration to low water concentration. This process is known as what? It is known as osmosis. Great. So the answer is C. And here comes the leaderboard. So very good. We have got a winner, Abhishek Raj. Great job, guys. I hope अगर किसी भी बच्चे को डाउट है, एंड जैसे कि लाइव क्विज चल रहा था, सो जैसे ही सेशन एंड होगा आप उसके बाद भी इस क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हो, एंड द लीडर बोर्ड विल कीप ऑन चेंजिंग. ओके, सो बेस्ट ऑफ लक. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी राइट नाउ, और एल्स विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. एनी डाउट इफ यू हैव यू कैन आस्क मी. सो अगर आप लाइव क्विज अटेंड नहीं कर पाए हो, सो ये लिंक एक्टिव रहेगा, आप लिंक पे जाके इस क्विज को आप अपने लिए दोबारा आप इसे प्ले कर सकते हो, एंड व्हाट विल हैपन, you can also compete and you can see कि आप लीडर बोर्ड पे आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो. Okay, so if you are going to get more points, you can change the leaderboard. Okay, your name will reflect over there. Okay, so thank you very much. Bye everyone. Take care. We'll meet in the